So today we will continue to do the properties of chi-square distribution. Properties of chi-square distribution. The next in the category is find the mod and skewness of chi-square distribution, right? Let X follows chi-square distribution with n degrees of freedom, right? Therefore, what is the PDF? This is 1 by 2 raised to power n by 2 ta n by 2 e raised to power minus x by 2 x raised to power n by 2 into n minus 1 n by 2 minus 1, and the values are lying between 0 and infinity. Now, what is mod? Mod क्या है? किसी डिस्ट्रीब्यूशन का mod क्या होता है? Highest frequency, the number of times frequency क्या होती है? Number of times the thing occur, कितनी बार एक चीज रिपीट कर रही है. तो जो highest frequency है वो mod, उसको हम mod कहते हैं. अगर मैथमेटिकली बात करें कि if you have a function and you want to find the value of a mod, it means आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको फंक्शन का मैक्सिमाइज करना है आपको फंक्शन को. तो डेरिवेटिव लेंगे 0 और चेक करेंगे कि उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू डबल जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है कि नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया वी विल गो अहेड. अब आपके पास बेटा ये ई में पड़ा है. इट मींस हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे? लॉग. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. Taking log on both sides. So what we will get? So after taking the log, you will get log of f of x here, right? This is equal. जो सारा constant है 1 by 2 raised to power tan by 2 में I am writing this like as k. Then you will have e raised to power x raised to power minus x by 2. वो as it is आ जाएगा minus x by 2. Then into plus n by 2 minus 1 into log of x. So you are left with this after taking log. Now differentiating with respect to x. So log का derivative 1 by f of x का derivative f dash x. Its value is 0, it's minus 1 by 2, then n by 2 minus 1, and log of x derivative is 1 by x, right? So this comes out to be after solving n minus 2 minus x divided by 2x. Now, since अब f dash x upon f of x, this comes out to be n minus 2 minus x upon. Now f of x आपका 0 नहीं है. Clearly f of x अभी आपने define किया PDF of chi-square distribution. This is not equal to 0. So only possibility is left is therefore f dash x is equal to 0. So on putting f dash x is equal to 0, you will get the value of x. This is n minus 2 minus x upon 2x. So when you will solve it, it implies x is equal to n minus 2. Now when you will take the second derivative, so when you will take the second derivative and you will check at x is equal to n minus 2, we get the double derivative is less than 0. It implies x is equal to n minus 2 is the mod of the distribution. Is the mod of the distribution. Now we will find out the skewness. Skewness of chi-square distribution. So we will write here Carl Pearson's coefficient of skewness, which is equal to mean minus mod divided by standard deviation. So you have all the values. What is the mean? The mean is n, the mod is minus n by 2, and the standard deviation is 2n because the variance is 2n. This is under root 2n, and that comes out to be 2 by n. And this quantity is greater than 0 for all n greater than or equal to. Because n is a natural number, so
So it starts from 1. So n is starting from 1, goes up to infinity. So this total quantity is greater than 0. So what is skewness? Skewness क्या बताता है? Skewness ये बताता है कि deviations किस तरफ है. So it means the chi-square distribution is a positively skewed distribution. It implies chi-square distribution is a positively skewed distribution. और जनरली उसका जो ग्राफ होता है, दिस इज chi square. जनरल जो ग्राफ हम यूज करते हैं 0 to infinity जाएगा. इट इज पॉजिटिवली skewed like this. ये ग्राफ होता है इन जनरल इसका chi square. राइट. So one more thing यहाँ से हम derive करेंगे. The skewness is inversely proportional to the squares of the square root of degrees of freedom. And यहाँ पे क्या है? Degrees of freedom. So coefficient of skewness, this is inversely, therefore Sk is inversely proportional to the square root square roots of degrees of freedom, right? So अब Sk जो है √2 by n है. So as n tends to infinity, √2 by n tends to 0. यानी skewness tends to 0. मतलब it means इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्क्यूनेस किसको टेंड कर रही है? सिमेट्री को. इट इंप्लाइज स्क्यूनेस टेंड्स टू सिमेट्री एज n टेंड्स टू इंफिनिटी. n कौन है यहाँ पे? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेस. राइट. सो जो ग्राफ की अभी मैं आपसे बात कर रही हूं, नाउ आई एम कमिंग टू द ग्राफ और कर्व ऑफ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन. स्मॉल n इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए क्या पोजीशन है इसकी? दिस इज chi-square, दिस इज f of chi-square. n is equal to 1 के लिए this is like this, right? n is equal to 2 के लिए this is like this. ये पहले वाला n is equal to 1 है, right? और this is for n is equal to 2. अब जैसे जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ती हैं, राइट, जैसे जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ती हैं, इट टेंड्स टू द सिमेट्री. ये देखो, ये n is equal to 3 के लिए, राइट, देन दिस इज फॉर n is equal to 3. Then again we have this is for n is equal to 4. Then again देखो, आपने ये जज करना है कि जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है, chi-square डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल होता जा रहा है. सिमेट्रिकल का मतलब ये उसकी पोजीशन थी जो हम जनरल लेते हैं. ये दिस इज अ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन. और जैसे जैसे n बढ़ा, यही कर्व किसमें कन्वर्ट हो गया? सिमेट्री, राइट? सो दिस इज अ सिमेट्रिकल कर्व. ये कब? व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट? सो देयरफॉर skewness also, this skewness states when the degrees of freedom increases, skewness tends to symmetry. Skewness का मतलब क्या है? Skewness का मतलब ये है कि जो डाटा जो है skewed नहीं है, यानी डाटा में जो वेरिएशंस हैं वो नहीं है,
वेरिएशन जो है वो नहीं आ रही है, जब वेरिएशन ही नहीं ज्यादा आ रही है तो स्क्यूनेस आपके पास क्या आएगा, 0 आ रहा है। सो एक इस प्रॉपर्टी से पता चल गया, एक हमने लिमिटिंग फॉर्म की थी, द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ chi-square distribution is normal distribution. That means whenever n tends to infinity, chi-square distribution approaches to normal distribution. So n is equal to 30, यानी ये सिर्फ वर्क करता है आपके पास n is equal to, आगे जाके हम chi-square टेस्ट करेंगे, ठीक है जी, और उसका एक टेबल होता है, टेबल वैल्यू है वो हमारे पास होती है n is equal to n less than or equal to, वैल्यू सिर्फ कहाँ तक होती है, n is equal to 30 तक। जब हमारा साइज, सैंपल साइज है, यहाँ पे जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 30 से ऊपर हो जाती है, देन वी विल यूज द नॉर्मल टेबल्स इंस्टेड ऑफ chi-square tables, right? So I am coming to the next property. Next property is additive property. Additive property of chi-square variates. The sum of independent statement क्या है? The sum of independent chi-square variate is also a chi-square variate. That is, if all xi, कितने हमारे पास chi-square variates with ni degrees of freedom. It implies their sum, summation I running from 1 to n xi. It is also a chi-square variate with summation ni degrees of freedom. Short में लिख दिया मैंने सारा. If xi follows chi-square variate with ni degrees of freedom, then summation I running from 1 to n xi also follows chi-square distribution with n1 plus n2 so on up to n degrees of freedom. Let's come to its proof. So what we have given that, so beta we will do it by the method of movement generating function, ठीक है? हर एक ये सारे के सारे x से क्या है, किसको फॉलो कर रहे हैं, chi-square को, तो इनका mgf क्या होगा, this is 1 minus 2t raised to power minus ni divided by 2, I running from 1 to k, but they have taken k, so we will take k as it is, I running from 1 to k. Now the mgf of sum. Now the mgf of the sum, summation I running from 1 to k xi is given by, it is given by m summation xi t, which is equal to, beta summation किसमें खुल जाएगा, product में, so up to into m xn t. So all are independent. So first की वैल्यू क्या होगी, 1 minus 2t raised to power minus n, ठीक है जी, लास्ट की वैल्यू होगी 1 minus 2t raised to power minus n k by 2. So 1 minus 2t is the base, you will add the powers n1 plus n2 so on up to nk divided by 2, right? So which is the mgf of chi-square variate with how many degrees of freedom, n1 plus n2 so on up to nk degrees of freedom. Hence by uniqueness theorem. Hence by uniqueness theorem of mgfs, summation of xi, क्योंकि mxi किससे मैच कर गया, m of summation xi जो है वो किससे मैच कर गया, वो मैच कर गया mgf of chi-square variate से with n1
plus n2 plus nk degrees of freedom. ठीक है जी? So it implies by the uniqueness theorem of MGF, the summation I running from 1 to k xi, this variable follows chi-square distribution with summation ni degrees of freedom. So this is the proof. The converse is also true. Converse of the theorem is also true. पहले बताया x1, x2, xn, xk chi-square वेरिएट है, उनका प्रूव करना था, उनका सम भी क्या है, chi-square वेरिएट आएगा। अब सम chi-square वेरिएट पड़ा है, हमें सिंगल सिंगल को प्रूव करना है, इट इज अ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी? If summation I running from 1 to k xi is a chi-square variate with summation I running from 1 to k ni degrees of freedom, then prove that each xi follows chi-square distribution with ni degrees of freedom. So proof हम कहाँ से शुरू करेंगे? अभी जो पीछे खत्म किया. So we will start the proof from MGF of summation of xit. अभी आपने किया बेटा पीछे. Same. कितना आ गया था वो? 1 minus 2t. सीधा ही आप लिखेंगे this is 1 minus 2t minus n1 plus n2 so on up to nk divided. पहले ये स्टेप आ रहा है. अब इसको ओपन कर लीजिए. 1 minus 2t raised to power minus n by 2 so on up to 1 minus 2t raised to power minus n2 by 2. So आपने अलग अलग, एक तो आपने सारे वेरिएबल्स को, इसका मतलब ये किसका है? ये mx1 t का है, ये किसका है? mx2 t का है, so on up towards ये किसका है? ये किसका है? mxn t का mgf है. Is it clear? So therefore एक तो चीज यहाँ से ये पता चल गई. It implies बेटा when you are able to write mx plus yt is equal to mxt into myt, it means the variables are independent. तो आपने पिछले में भी यही किया. Since आप यहाँ पे रिजल्ट लगाएंगे, it implies all xi's are independent and every xi is following chi-square distribution with ni degrees of freedom. So this is all about the properties of chi-square distribution, right?